आर्ट में कोई बाउंड्री नहीं है। आर्ट में आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरीके की बाउंड्री नहीं है। ये एक चीज़ कला है जो आपने सीखनी है शिद्दत से। बेशक 3 महीना हो या 4 महीना हो, शिद्दत से। अब हमारे जनरेशन यूथ में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, वो एक जगह में बैठ के मेहनत नहीं कर सकते। अब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैं सामने 5 बच्चों को बिठाऊं, मैं उनको बोलूं ये आपने लाइन 100 बार खींचनी है, आप यकीन नहीं करोगे वो 100 बार नहीं खींचेंगे, 99 तक छोड़ देंगे या 80 तक रखेंगे। आप टैटू सीखते सीखते आप स्केचिंग सीख सकते हो। राइट। हर चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। I think firstly, of course, communication. Communication, if your communication is intact, then it doesn't matter, you know, we are taught when we are given pageant training that it doesn't matter what you say, it matters how you say it. So that actually plays a huge role. It doesn't matter if you can't think of an answer, but if you're still confident while saying it, the other person might not even notice. I must share this with you that, you know, what you say only plays 4 to 7% of a role, and 94% is how you say it. While I was there, the one thing that I saw was his campaign on Digital India. Acha. Right. So one of the first things that he came to India is Correct. when he came to power is he started talking about Digital India, and that struck a chord with me when I was at Harvard. I was studying e-commerce out there, and I realized that Digital India hoga. India is going to get to that place. India is going to be really big. India is going to be a really big ecosystem in the digital world, you know, and merely because of our population. And so I took the move. I came back to India. Very luckily, my timing was good. 2016, Mukesh Ambani launches Jio, right? The basic is the key. Before you attempt to become whatever in your life, आपका basic जो है ना, वो अगर आपका in place है, you can always graduate and make it very interesting and make it great for yourself. So पहले आपको है, बहुत ही जरूरी है कि आप पहले सीखो। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अगर आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपका सक्सेस ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ्रूटफुल है, more satisfying for you. At the end of the day, people want to look at your portfolio. If you have good work, you may outshine the best from the best. So your portfolio has to be really, really, really strong. So portfolio is one of the key deciding factors. When I receive portfolios, for me, I actually very rarely look at the CV. I jump to the portfolio. Because sometimes I see, oh, this person is from so-and-so institute, but the work is not so great. So what are they doing for you? And sometimes I am looking at the work and I'm like, that's amazing work. And I look at the institution and like, oh, interesting. This kid is amazing because despite maybe not having that label, their work is outshining everybody else's. So the portfolio is very, very critical. More than communication skills, more than anything else. It's the one factor that can push you through any door. So I joined AdWork. They put me under the CRO, the Chief Revenue Officer. I worked under him for about a year before I decided that this is great, but I want to follow my passion. And that's when I quit my job and started Puppizo. So how all of a sudden from automation to pets? Because there's a parallel story that's also going on which doesn't reflect with academics and career choices. Please share that. A completely, love-based thing. So ever since I was a kid, I've loved animals, especially dogs. Okay. So ever since I was 6-7 years old, as young as I can remember, I used to have this habit of feeding all the street dogs in my colony. Wow. I've named all of them, and one of them, Bruno, who was the first dog I ever fed, is still alive to this day. I've been feeding him for the past 16-17 years, so he's a very old dog. He's a very old dog, and it's remarkable he's still alive, touch wood. So I've always been passionate towards that. So I've always had like 3-4 streeties that I fed, and then that number kept expanding, growing until
I've also helped certain shelters, but that love for pets was always there for dogs. अगर हमारे दोस्त जो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपके नंबर कहीं कम आते हैं, कहीं आप कभी फेल भी बाई चांस हो जाए, नंबर कम आए, तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा बंदा भी एक ठीक ठाक जगह पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज में एवरेज है, आपको वो खोजना है, किसी और में हम एक्सीलेंट होंगे। जब वो जर्नी हो जाती है तो आप एक्सीलेंस में आ जाते हैं। आपने मेरी वाली बात कह रही है जो अक्सर मैं कहा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एवरेज हैं तो घबराइए नहीं, इट्स ओके टू बी एवरेज। आपकी अभी एक्सीलेंस अभी आपको खोजनी है, खोज लेंगे तो आप भी एक्सीलेंस वाले में आ जाएंगे, नहीं खोजा तो आप एवरेज में रह जाएंगे। इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड। अगर आपको कैरियर के बारे में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं भी कंफ्यूज था। अगर आपको नहीं कुछ पता, कम नंबर आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप पे काम कीजिए। मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। मैं एवरेज था, मैंने जो एक्सीलेंट काम करने वाले थे उनका काम देखा, यार इसने लेआउट बढ़िया बनाया, तो उससे जेलसी करने के बजाय अरे ये तो ऐसे है, उससे सीखा मैं इससे बेटर बना सकता हूँ। You have to always think that the person in front can still teach me something new today, or the product in my glass will teach me something new today. So you can never approach a product with a preconceived notion that I've tasted this 1,000,000 times, I know how it tastes. I've had Black Label 1,000 times, and the 1,001st time when I taste it, I will still come to it like I don't know it at all and see what it tells me. If it conforms to referees with 1,000 tastings, I'm happy. If it does not, I will always tell you what is in my glass. So you might tell me, Mohan, this is a $1 million bottle of wine. But if my senses tell me there is something wrong, in all humility, I will accept that over your word and I'll humbly submit it. So knowledge combined with humility makes you solid. Then the last thing that you need is practice. You need to get out there and try and practice a skill 1,000 times, 1,000,000 times, which makes you better. पहली बार अपने को समझना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं। राइट। तो ये मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप जो अच्छा लगता है, एंजॉय द वर्क, देन पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशंस। इफ यू आर गुड वर्क, आपका काम अच्छा एडमिट लोग कर रहे हैं, आपको तारीफ कर रहे हैं, गैलरी और आर्टिस्ट फ्रेंड्स वेरी नो दैट्स द बूस्ट, नो यू गेट, यू डू द मोर क्रिएटिव वर्क, ऑटोमेटिकली पैसा मिल जाता है। अच्छा, वो बिक जाता है। अच्छा काम को कोई भी ना नहीं बोल सकता। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो कोई भी बड़ी गैलरी आपको इनवाइट करेगी और आपको एग्जिबिट भी करेगी। मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने रुचि, रुझान और क्षमताओं को ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आपके इंटरेस्ट एरियाज, आपकी एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी उस तरह की है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट बन पाऊँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लैंग्वेज के साथ एक प्यार है, मोहब्बत है, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग राब्ता रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, और आप नेचुरली लैंग्वेज पे अपना कमांड बिल्ड करते चले जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक करियर चॉइस आपके लिए हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, के बारे में बातचीत करते हैं और बहुत लोगों के साथ संपर्क में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक करियर चॉइस आपके लिए हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं और आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं, या आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो क्योंकि जर्नलिज्म बहुत सारे दरवाजे खोलता है, हंड्रेड्स ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर इन टुडेज टाइम।